Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing the very first chapter, that is about the alphabets, the letters, and the words. So let's just begin with this. You all will be learning a lot with this chapter. So let's just begin. So the title of our chapter is the letters and words. Letters, words और alphabets के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. So can you write English alphabets over here like A से लेकर Z तक, right? So what we will see about letters, we'll study first about letters. सबसे पहले हम letters के बारे में पढ़ाई करेंगे. There are 26 letters in English alphabet. English alphabet में कितने letters हैं? 26 alphabets हैं. A set of letters written in an order, उसी को हम क्या कहेंगे? Alphabets. जो letters हैं वो alphabetical order में arrange रहेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे? Alphabet, right? In English alphabet, the letters, they are of two types. They are below. दो types के होते हैं. The first is the vowels. That is, there are 5 vowels. And in English language, vowels are 5 and they are A, E, right, I, O and U, right? And rest of the words जो इनसे बचे हुए हैं, that is 21, they are consonant. So consonant in English, the consonants are 21 and they are P, C, D, right? E जा चुका है ऊपर, वो vowel है F, then it's G, then H, J, K, it's L, M, N, right? P, Q, R, S, T, T, V, W, X, Y and Z, right? So English alphabets, they are written in two ways. दो तरीके में लिखे जाते हैं. The first is the capital letters, जिनको हम upper case बोलते हैं. आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में A, B, C and till आप देख सकते हैं ये पूरा, ये this D, E, F, G, H, right? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. सिमिलरली स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं जिन्हें हम लोअर केस लेटर्स बोलते हैं, जैसे कि अगेन A, B, C, D, E, F, G, right? H, I, J, K, L, M, then it's O, P, Q, R, S, T and U, V, W, X, Y, Z. They are always written in this format only, right? So there is a fact file that capital letters are also known as uppercase letters. जो capital letters होते हैं उन्हें हम uppercase letter बोलते हैं, whereas small letters को हम lowercase letters बोलते हैं. And what are words? Words क्या होते हैं? A group of letters that give us the correct सेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स. जिसी तरीके से एक सेंटेंस वर्ड्स को मिला के बनता है, इसी तरीके से अल्फाबेट्स को मिला के क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस बॉय, राइट, गर्ल, सन, पेन, बुक, ये सब, राइट. देयर इज अ रिकैप. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में. 26 लेटर हैं. सेट ऑफ लेटर्स रिटन इन ऑर्डर, उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे. The letters, they are of two types, vowels and consonant. There are 5 vowels and 21 consonants, right? In English, letters are written in two ways. Letter दो तरीके से लिखे जाते हैं, capital letter and small letters, right? Capital letters को हम upper case letters बोलते हैं and small letters are called the lower case letters. उनको हम क्या बोलते हैं? Lower case letters बोलते हैं. So moving on to the exercise, first we'll be doing these exercises that in English language, right? How many letters are there? There are 26 letters, right? In English language vowels कितने होते हैं? 5 and there is a vowel. कौन सा इसमें vowel है? That is A, right? And a group of letters that give a complete sentence, उसी को हम क्या बोलेंगे? Word बोलेंगे. Now you have to identify the picture and complete their names with suitable vowels. जैसे कि आप देख सकते हैं MAN, man. हम यहाँ पे E क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मैन के बारे में बात हो रही है. ये है ट्री, TREE. This girl, I लगा दिया. DOG, dog, right? CAT, cat, right? RAT, rat. Kite में KITE, ठीक है? BAT, bat, right? Then the next is HAT, hat, right? This is house, HOUSE. All the blanks, they are containing vowels, right? HORSE and SCHOOL. You have to rearrange the letters correctly to the name of the pictures. जैसे कि ये सेनो, अब आप देखिए ये क्या है? This is an I, this is EYEI. एक ही I के बारे में बात हो रही है. This is nose, NOSE, nose. ये क्या है? हमारा ear, एक ear के बारे में बात हो रही है. और ये क्या है? हमारा mouth, MOUTH, right? Moving on to the next is, this is duck, right? This is cock. Then next is parrot. And then the next is owl, OWL, owl. So I hope you all understood about letters, alphabets, sentences, and please make sure that you will revise this and please keep revising. Stay blessed. Thank you.